Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today is a new video lesson about MX Excel shortcut keys, and in this video you will learn how to select the column or table or the entire sheet while working in Excel. तो इस नए वीडियो लेसन में आप लोग सीखेंगे कि किस तरह आपने MXL में काम करते हुए कॉलम को, टेबल को, एंटायर शीट को कैसे आपने सिलेक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन को स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। एज यू आर वाचिंग आई हैव क्रिएटेड टेबल हियर। मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है जैसा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आके मैंने क्या कर देना है, कंट्रोल ए की प्रेस कर लेनी है। कंट्रोल ए, जैसे ही मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो जो टेबल बनी हुई है आपके सामने नज़र आ रहा है, ये सिलेक्ट हो जाएगी एक दफ़ा कंट्रोल ए की प्रेस करने से। व्हेन आई press one time control A key, the table that I have created in the sheet will be selected, and again I want to select the entire sheet. I will again press control A key from the keyboard. तो जैसे मैं दोबारा कंट्रोल ए की प्रेस करूंगा तो इंटायर शीट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। So if you type if you to press one time control A key, your sheet or data is selected, and when again you press control A key from second time, the entire sheet will be selected. I am doing again for you. Now you can see control A, the table is selected, and again control A, the entire sheet is selected. So in this way you can select the data or table in the in Excel sheet कि आप जैसे Excel में काम कर रहे हैं तो कैसे आपने जो ना जो डेटा आपने टेबल बने उसको कैसे सेलेक्ट करना है और इंटायर शीट को आपने कैसे सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आसानी के साथ आप डेटा टेबल को, कॉलम को और इंटायर शीट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।